good evening. Did you guys like the show? Yes, yes, superb, superb. Inner thanda kaise yaar? We'll be excited about this. Did you guys like the show? Yay! Ah, nice. Well, I have to tell you something. It was very, very important that you brought that energy today, because today's show was Rebecca Divan's very first show ever. And she killed it. The term we were using was, we have to kill it. हमें ये show इतना बेहतरीन करना है कि it stays as a beautiful memory of starting something new. And it was a night that had a fantastic team. Kedar, we love you. Acha, he's here only. Entire team of Kedars. Everyone from the sound, from the lights, the stage, the designer herself. सबने बड़े दिल से ये show किया है. All the models, I'm seeing everyone after a really long time. And every time I do this, you know, I want to touch the ramp and kiss it, because I don't know, एक ऐसा रिश्ता है इसके साथ that every time I come on it, I feel like life just comes on, you know? For me as well. So thank you guys, I'm glad you liked it. And since you have no more questions, should we pose? Ah, there is questions, okay. So, सुष्मिता जी, hi. हाँ जान. सुष्मिता जी, हमने देखा है कि मौसम बदल जाते हैं जी. हम जर्नलिस्ट बदल जाते हैं जी. लेकिन आपकी जो खूबसूरती है वो कभी नहीं बदलती, वो ऐसी ही रहती है. वो कुछ बताना चाहेंगे आप कैसे? एक तो तहे दिल से शुक्रिया जान मेरी. थैंक यू, थैंक यू. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सुनने के लिए हम 6-6 घंटे बैठते हैं तैयार होने के लिए. नहीं जान, खूबसूरती इंसान के वजूद से आती है, बाहर से नहीं. So I think as long as I have that inside of me, I'm hoping that मौसम के साथ, उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, मुस्कुराना नहीं भूलूं कभी. जब तक वो आता है, I will stay beautiful, इंशाल्लाह. और हमने देखा बहुत ही एक्साइटेड थे आप आज की शाम रैंप वॉक के लिए, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आज का ओवरऑल? बहुत अच्छा था. मैं यहाँ आई थिंक 1 बजे पहुँची थी आकर. इतनी एक्साइटेड थी कि 8:30 बजे के शो में मैं 1 बजे से आके हाजिर हूँ. It is a very special thing for me as someone who is the first showstopper of Rebecca Divan's very first show to make sure that we deliver it. And the track, आपने सुना? मेरी आवाज़ थी track के beginning में. Yes, yes, yes. पता चला वो मैं थी? हाँ. नहीं पता चला? थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा. थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट शो में पूरा वर्स बजाएंगे. But we wanted to personalize it, so we came, we rehearsed, and then Rebecca being Rebecca, हम लोग सब यहीं पर हैं होटल में, सब यहीं पर रह रहे हैं, baggage के साथ, because we wanted to give it 100%. It just makes us so happy कि वो मेहनत जो हम सब ने as a team इस शो में डाली है आपको पसंद आई. रिबेका जी, आपका ये कैसा रहा एक्सपीरियंस, और स्पेशली सुष्मिता सेन जैसी गॉर्जियस ब्यूटीफुल के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे आपने कहा, gorgeous, beautiful. These two words absolutely are Sushmita. She is beautiful inside as much as outside. So it's my first show, and I couldn't have asked for anything better. Sushmita is perfect. सुष्मिता दी, हाय, कमल here from E24. हाय कमल. जैसे कि आपने कहा कि रैम्प के साथ आपका एक अलग ही नाता है, बॉलीवुड के भी आपका एक अलग ही नाता है, लेकिन कई दिनों से आप बॉलीवुड में नहीं आ रहे, और कल आंखें 2 का ग्रैंड अनाउंसमेंट हुआ है. सुना मैंने. जी जी. तो क्या आपको अप्रोच नहीं किया गया है? देखिए ऐसा है, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट वन. आंखें 1 में मैं मर गई थी, तो अगर आप मुझे आंखें 2 में एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो ही वापस ला सकते हैं. Otherwise, it's going to be a little difficult. But I'm just happy that there is a sequel being made, because it was a brilliant film. And that film was scripted from a Marathi play, a very famous Marathi play. So I'm very excited to see part 2. Yeah, I feel really bad for them. They're going to miss me. हाँ सुष्मिता जी. हाँ जी जान. हमने देखा है कि इन दिनों कई सारे स्टार किड आ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं जी. तो आपकी जो छोटी बेबी है, आई थिंक रेनी, बड़ी बेबी रहने बेबी, हाँ. तो हाँ, वो हम उन्हें भी देखेंगे कि आपके पद चिन्हों पर चलते हुए. देखिए ऐसा है कि
मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी मेरे तरह नहीं बने. I want them to be unique. I want them to have their own identity. अपना एक ऐसा character जो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो. So it's going to take some time. And if they choose to be actors or any other professional, I'll be more than happy for them. But they have to get a degree first. They have to be very smart up here. So we're working on that. But I just want to say, आज हमारे देश के लिए आज सुबह से हमारे देश के लिए मतलब मेडल पे मेडल बरस रही है. And I'm very, very excited and very proud. आपको अंदाज़ा नहीं है इस शो पे आने से पहले we saw my beautiful girl from Hyderabad finally confirming either a gold or a silver in badminton. I'm so excited about that. Yes, we should applaud that. To wear India on your chest, to represent your country, it's a feeling I have known. And when I see someone else do it, मैं makeup पहन के रोना शुरू कर देती हूँ. It's just a very emotional thing for me. So tonight is a very special night, and going by how special it is for our country, the fact that Rebecca Divan also launched herself and her dreams and her line tonight, it's going to be quite a powerful time for women. Very happy for India. Very. सुष्मिता, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले से यहाँ पर हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें मॉडल्स की, तो आपने कुछ टिप्स दी हैं मॉडल्स के लिए? नहीं, मैं आजकल सीख रही हूँ उनसे. बिकॉज जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी वो 20 साल पहले की बात है. You've got to keep evolving, you've got to keep watching. I'm learning from them. The only thing I teach them is smile more. रेबेका, आपसे सवाल है मेरा. This was your first show. आगे क्या देखने मिलेगा हमें इसके अलावा? ये पहला चैप्टर है. अभी तो बहुत चैप्टर्स आने बाकी हैं. बहुत कुछ देखने को मिलेगा. और एक सवाल सुष्मिता जी, एक सवाल जो कि हम कई बार सलमान खान से पूछते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है. अच्छा. आपसे भी हम पूछेंगे कि मैं गेस करूं सवाल? शादी करूं आप दो ऐसे लोगों से ये सवाल करते हैं who celebrate being single. They're not single because they didn't find anyone. They did that by choice. And go Salman, go Sush. सुष्मिता जी. जी सर. एक समय था, सुनील गावस्कर जी ने कहा था जी कि जो टेंजिंग जो हिलेरी जो पहाड़ पे गए थे उनका नाम होता है. जी. आप मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं. जी. आपके पास ऐश्वर्या राय जी आई. जी. प्रियंका चोपड़ा जी आई. जी. उन्होंने बड़ा कुछ हासिल किया, आपने भी बड़ा थोड़ा कम हासिल किया उनके हिसाब से. बहुत कम. इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ने जो हमारे लिए किया है बहुत कम लोगों ने किया है. शी इज मेड अस वेरी वेरी प्राउड. बट जो आपको जो अचीवमेंट हुई है वो अपनी जगह है. जी. तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आगे करना चाहती हैं? किन के बारे में? दो लड़कियां आई हैं आपके बाद मिस यूनिवर्स बन के, पहली आप बन चुकी हैं. जी, मेरे बाद लारा दत्ता बनी है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें कोई मिस यूनिवर्स मिली नहीं अब तक, मगर मिलेगी, अब मिलेगी, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है. As you can see from Olympics to everywhere else, we're going to win. We expect. Absolutely. मेरे कलेक्शन के बारे में, आपके कलेक्शन ये ड्रेस, यस, मुझे 3 ड्राइंग्स भेजी गई थी. सरप्राइजिंगली मैं ये सोच रही थी ये मुझे देख के बनाया गया है क्योंकि सब ब्लैक थे, तो there were no colors, there was like black and grey, and all 3 were stunning, but I just felt that this cowl look, it's very princess, very queen, very regal, and हम चाहते थे कि उनके पहले शो में the showstopper should have the feeling of a queen walking out, and we achieved that. So I think we picked the right dress. It's very comfortable. आप लोगों को Rebecca के बारे में कुछ बताऊं? She is this very contemporary woman who has a very Indian heart, and she's gone all out. If you notice, all this work you see on the drapes and the other dresses, even for the kids, she's promoting handicraft from the rural areas of India. So Gujarat, Banaras, Lucknow. I think it's spectacular when you can take a modern idea and give it Indianness. And she's done that through her collection. So I'm very proud to be promoting that with her tonight. Very special, yes. Very, very special. Yeah, Rebecca, over here.
Rebecca, of course, Sushmita, she is the Miss Universe and she is the epitome of beauty. Apart from that, which is that thing what made you to just walk her on the ramp for your, to showcase your Why beauty? did I Yeah. choose her, you mean? Sure. She's a true woman. She's a woman of today. She's strong. She's a mother. She's a businesswoman. She's a style icon. So she's perfect. She was perfect for Rebecca Divan. She resonates with Rebecca Divan perfectly. I like that. And Sush, which is that thing? Which is that thing? What makes you to stop the show? Why do you love to stop the shows? Okay. Well, given an opportunity, and if you had my body, you would love to stop it too. I'm kidding. I think the whole idea of a showstopper is to say, this is the journey, and this is how we say, we did it. And so the showstopper becomes the one that stops that moment and hopefully epitomizes it for times to come. There is not a soul in this world, a model, a celebrity, anyone, who would not consider it a privilege to be asked by a designer to stop their show. I'm no different. Thank you. Hi, Sushmita. Hanji. Hi, here. Hi, Jan. Hi, I'm Akshita from iKarmic. Hi, So Akshita. my question is, as you and then we have Sakshi Malik, जो Yes. एक side में Olympic की इंडिया की शोभा बढ़ा रहे हैं, and दूसरे side में there is Deepa, don't miss Deepa. I am so proud Deepa, of her, yeah, man. She's Deepa, done and such then an there's outstanding PA, job. PA Sindhu. ये लोग शोभा बढ़ा रहे हैं, और on the other hand we have a शोभा जो उनकी शोभा घटा रही है इंडिया की. Jan, So- आज नहीं बात करेंगे. This is not nice. I want to know anything that you would want to say to people who discourage people like you or, Deepa or any other person who's trying to, win laurels for the country. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. That's the one you have to remember. And you got to not, whatever you focus on becomes your reality. All people in this world who've achieved something or anything in their lives have done so because they've got blinders on to negativity. They only see what's positive and they keep going for it. They fall, they get up, they fall, they get up, but they don't give up. So Naijan, I still go back to it. You have to keep your focus on good things and you will own good things. Thank you, darling. Wow, lovely questions today. I've missed you people. Really. Thank you very, very much, Anne Marie. Ijazat? Yes? Thank you.